So, hi guys, today we are going to learn 12 ready-made sentences and phrases which are used more often than not by native English speakers. Due to that, guys, their English is very fluent and advanced. तो आज आम यही भिडियो 12टी रेडीमेड सेंटेंसेस गुड़िक शिखा जाऊँगी जोटा फ्रेजेस भी कहीपर जोटा कि नेटिव स्पीकर मैंने यूज कर फ्रिक्वेंटली माने यूजुअली जोटा गोटे फ्रेज कहले मोर ऑफन दैन नॉट जो कि इंग्लीशटा बहुत इफेक्टिव लगी था फ्लुएंट लगी था एडवांस लगी था तो सेपरी फ्रेजेस गुड़िक आज आम शिखा ओके तो देख मुझे बहुत हिंदी आउ ओडिया रे लिखी इंग्लीश रे भी तार एक्सप्लेन कर तीन लैंग्वेज रे लिखी जोटा कि बहुत इजी हे तुमको बुझापी सो गाइस इफ यू आर not from our Odisha then also you can understand it because I have written here in both English and Hindi language so that it will be easier for you to understand guys. So without any further delay, let's dive into the video and learn what are those 12 types of ready-made sentences. तो चलो वीडियो को देरी न करी आरंभ करिबा। हमर प्रथम फ्रेज टी होची in the first place जहार इंग्लिश होची टू बिगिन विथ माने इजी लैंग्वेज रे तापर हिंदी रे सबसे पहले प्रथम है हम ओडिया रे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ओके सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा सर्वप्रथमे मु किछि एठारे कहिया को चाहिबी प्रथमे तो मु तुमको किछि देबा को चाहिबी तापर ताहा कहबी या जहाबी माने प्रथमे जेते सेंस आसे ना सही केस रे तमे ए जो इन द फर्स्ट प्लेस टा यूज करो जेमति गोटे फॉर एग्जांपल in the first place guys I would like to tell you here that watch this video till the end without skipping even 1 second सर्वप्रथमे मु तुमको कहबा को चाहिबी ए वीडियो को गोटे सेकंड भी स्किप न करिकि ना लास्ट पर्यंत देखो टू गेट बेटर एक्सपीरियंस तापरे हमर सेकंड फ्रेज टी होचे ऑन द अदर हैंड तार मीनिंग होचे शोइंग कंट्रास्ट दूसरी और अन्य पक्ष रे जमती कि मोटे एग्जांपल देबी मु इंग्लिश कहिया पसंद करे अन्य पक्षरे मोर भाई जे कि इंग्लिश टाको घृणा करे आई लव स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑन द अदर हैंड माय ब्रदर हेट्स दिस इंग्लिश लैंग्वेज ओके आई एंजॉय स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑन द अदर हैंड माय ब्रदर हेट्स दिस इंग्लिश लैंग्वेज तो है ना माने मु गोटे आड़े अच्छी आउ गोटे आड़े मोर भाई जे कि विरोध कर इंग्लिश टाक जे कि इच्छा करे ना ओके एमती हिसाब से तार कंटेस्ट कर ना दुईटा ये तो से केस रे तुम ये ऑन द अदर हैंड लगे पार आमर थर्ड नंबर फ्रेज टी हूँ टू सम एक्सटेंड मीन्स कौन पार्टली ट्रू कुछ हद तक किसी पर्यंत कुछ हद तक वो सही है कुछ हद तक वो सही है हाँ किसी पर्यंत से ठीक अच्छी माने से जहाँ भी कहला किसी पर्यंत से ठीक कही तो से केस ना तुम जो टू सम एक्सटेंड यूज कर जमती कि फॉर एग्जांपल से जहाँ भी कहला किसी पर्यंत ठीक अच्छी व्हाट एवर ही स्पोक टू सम एक्सटेंड ही इज राइट व्हाट एवर ही स्पोक टू सम एक्सटेंड ही इज राइट ओके ए हिसाब से तुम ये जो टू सम एक्सटेंड यूज कर तो देखो एमती केते माने इंप्रेसिव आ केते एडवांस लाଗୁଛି तमे एबे ए जो फ्रेजेस गुडी को सिखला पर जानो थिबो तो गाइस सेति पय एमती फ्रेजेस गुडी को यूज करो तुम डेली लाइफ रे आ इंग्लिश टा आउट के स्ट्रांग करो जोडी तुम इंग्लिश टा को ना बहुत स्मूथर भी करबो आउट के प्रिसाइज माने शॉर्ट कर देबो ओके हमर 4 नंबर फ्रेज बा रेडीमेड सेंटेंस टी होची व्हेन इट कम्स टू I use this phrase more often than not guys in my English तो यार मीनिंग कौन टॉकिंग अबाउट a specific topic जब बात आती है जेते बेले कथा से हाँ मु तो इंग्राजी वीडियो गुडी को खाली देखुनी माने ताठु से किछि सिखुछि भी किंतु जेते बेले मोर सांग मान को कथा आसे जेते बेले अलगा लोकन को कथा आसे से माने खाली वीडियो देखंती किछि सिखंतीनी जेते बेले कथा आसे when it comes to I not only watch English contents but also I try to practice myself and I try to understand as well. But when it comes to other people, they only watch English videos. They don't try to speak by themselves. तो when it comes to यूज करिए बहुत फ्रिक्वेंटली एटा यूज है बहुत इजी भी ओके आ गोटे एग्जांपल ले जबा जेतेले मो कथा से मु काहे के जाने कहला बेले रही जाए
when it comes to me, I don't know why I'm strong in speaking or I'm strong while speaking. एमती हिसाब से तुम ये when it comes टाको यूज करि परिबो। तापर हमरा 5 नंबर फ्रेज बा रेडीमेड सेंटेंस टा हेउचे as far as I know, बहुत कॉमनली यूज हेडा जानि थाओ माने जानि छ तमे जार मीनिंग के अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जोड़ा हिंदी हेउचे जहां तक मुझे पता है, या हम ओडिया रे जे पर्यंत मते जणा, जे पर्यंत मते जणा तुमे भलो इंग्रजी कुह। as far as I know you speak English well, as far as I know you play football well। एंते हिसाब रे ये as far as I know टाको यूज करिवो। as far as I know learning this language is not a piece of cake, neither a big deal। तापरे हमर 4 नंबर रेडीमेड फ्रेज टे हेउची इन माय ओपिनियन। तुम जानि छ माय पर्सनल व्यू, निजर मत जेतेले दियो ना सेही टाइम रे इन माय ओपिनियन यूज करो। हमर हिंदी रे वर्ड टे हेउची मेरी राय में या मो मतानुसार। राइट, तो देखो केमती यूज करबा जेतेले तुम निजर ओपिनियन बा पॉइंट ऑफ व्यू रे दोछ मो मतरे हमको डेली इंग्लिश कहिबा दरकार। इन माय ओपिनियन वी शुड स्पीक इंग्लिश इन आवर डे टू डे लाइफ। एमती मो मतरे तुमको एठाय किछि समय अटकेबा दरकार। इन माय ओपिनियन यू शुड स्टे हियर फॉर सम टाइम। आशा करूची ए जो 6टी रेडीमेड सेंटेंसेस बा फ्रेजेस जोडा मु कहिले ताको बुझी पारिथिबो आउ तमे नोट डाउन भी करदियो, काने एबे जदि वीडियो देखियो पुरे स्किप कर दियो पुणी पुरे जते तमे यूज करे आसीबो तमे इंग्लिश सेंटेंस गुडी करे सेतेले जानि नथिबो। तो सेति पे जोटा भी तमे सिकुछ नोट डाउन करो आउ नोट डाउन करि साला परे निजे ट्राई करिवो कि सेंटेंस बनेकी। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर 7 नंबर ऑफ रेडीमेड सेंटेंस गाइज व्हिच इज फ्रेज एज वेल, जोटे कि हमरो एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे माने कोन फाइनली या आफ्टर एवरीथिंग सबु सरिला परे बा पूरा शेषरे आखिरकार बा शेषरे। फॉर एग्जांपल most of the people watched this video but at the end of the day they forgot everything। most of the players tried to play well but at the end of the day they lost the game। हला तो ए हिसाब रे तमे ए जो at the end of the day को यूज करि पारिबो। तापरे हमरो 8 नंबर रेडीमेड सेंटेंस बा फ्रेज टी हेउची फॉर द टाइम बिंग। सो गाइस बडी फॉर कोने ला फॉर कोनी फॉर माने एफ और एफ ए खाली स्थान कर जाओ आर टा काटी दोची फॉर द टाइम बिंग टेम्पोरली फिलहाल एबे पाई मु सबले रेकमेंड करे। आ गोटे माने हमर जो प्रीवियस वीडियो रे तले से वीडियो रे मु कहिचे फॉर द टाइमिंग टा बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। तमे सबले कहो जे एबे पाई मु एठा अछि नाउ आई एम हियर, नाउ आई एम ईटिंग, नाउ माय फादर इज बीटिंग मी, नाउ वी आर स्लीपिंग। नाउ बदले ना एबे पाई जदी सेंस अछि ए जो फॉर द टाइमिंग टा को यूज करो। एबे पाई मु इंग्लिश कहिबा चेष्टा करछि। फॉर द टाइमिंग आई एम स्ट्राइविंग टू एनहांस माय इंग्लिश। For the timing I'm making these ready-made sentences video। For the timing I'm trying to convince you to learn this English language। तापरे हमरा 9 नंबर रेडीमेड सेंटेंस टा होचे जोटा कि ए वीडियो रे मु 2 थर रु 3 थर मु यूज करि सारी छेला। तो देखो तुम जदी माइंड करिनो से नोटिस करने बे नोटिस करो मोर ऑफन देन नॉट सब बेले आमे काहे कि यूज करबा ए जो यूजुअली टाको ए यूजुअली बदले आमे तो ए जो रेडीमेड सेंटेंस टा हम यूज करबा बहुत इंप्रेसिव लागे, बहुत एडवांस लागबा हमर इंग्लिश टा। जेमति कि ज्यादातर प्रायशः we use basic words and sentences more often than not। instead we should keep in our mind some advanced ready-made phrases and sentences from this Fluent Odisha channel and strengthen our English। तो एमती सारे मोर ऑफन देन नॉट टाको यूज करिवो जोडी तुम यूजुअली करो। तो यूजुअली जगह रे ना ए जो मोर ऑफन देन नॉट टाको यूज करो जो माने आउट कोन कहली हां जो माने वीडियो गुडी को तुम पाई पारिबो ए जो फ्लुएंट ओडिशा चैनल से पे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस जदी वीडियो टी बहुत इन्फॉर्मेटिव लागुछ नुवा किछि जदी सिखुछ। तापर हमर 10 नंबर सेंटेंस टी होची एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ता माने कोन एक्चुअली वास्तव में प्रकृत रे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट you know I'm really concerning about your English too।
now I can speak in English. So is it enough? Yeah, to some extent it's okay, but guys, if you are not able to speak in English, then with whom I will practice? So due to that, guys, even you need to learn this spoken English so that we all can communicate with each other in this English language. So as a matter of fact, प्रकृतरे मु किछि पर्यंत मु इंग्लिश कहि पारिबी, बट जेतेले तमे कहि पारिबो तुम कहा सहित प्रैक्टिस करबी, तो सही हिसाब रे तमे ए जो एक्चुअली जगह रे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूज करि पारिबो. As a matter of fact, I'm not only showing off my English language, guys. Truly, I'm feeling it from the bottom of my heart and expressing my emotion here, guys. तापरे हमर 11 नंबर सेंटेंस टी हेउची बाय एंड लार्ज, जोटा कि आमे जनरली कहो आ हिंदी रे आम तौर पर, ओडिया रे साधारणतः. गोटे जदि सेंटेंस नेबा बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज he speaks English and he thinks yeah, you can also learn this spoken English by observing people, by listening to others, but how that person can understand if no one is speaking in English in his surrounding? Due to that, first of all, start from scratch, and you know where from where you need to start, that I have already mentioned in my previous videos. You can check it out. तापरे हमर 12 नंबर सेंटेंस टी होची लास्ट बट नॉट लीस्ट. यस गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट तो मैं बहुत थोड़ा सुनी थिबो, किंतु वो आउची 90% ना 100% तो मैं यूज करूथबो ए जो ए गुटे रेडीमेड से लास्ट बट नॉट लीस्ट. टू बी ऑनेस्ट गाइस, मु भी एटा एबे बे सिखुची. ओके, वीडियो बनेला पर सेति भाई माने ए वीडियो बनेबा दरे कि तो मु सिखुची, ता सहित तुमको भी सिखुची, तुम भी मोठारु सिखि पारुछ हला. सिखुची माने मु तो नॉलेजेबल एडी एक्सपर्ट नुह, के भी एक्सपर्ट हे पारेबनी, बट हां गोटे बेनिफिट पाउची एडी मु सिखे मु भी सिखि जाउची. ओके, तो देखो लास्ट बट नॉट लीस्ट माने होची माने गोटे जो लास्ट थिबो ना ताकू तमे आउटे प्रायोरिटी दोउछो, इंपोर्टेंट देखौछो जे हां एटा भी इंपोर्टेंट, जेमे तारो इंग्लिश मीनिंग फाइन एंड इंपोर्टेंट पॉइंट, अंत में लेकिन महत्वपूर्ण, शेष रे किंतु गुरुत्वपूर्ण. फॉर एग्जांपल, आई नो 3 to 4 languages, such as first is my mother tongue, Sambalpuri, second is my state language, our Odia, third one is our Hindi, and last but not least English. तामाने होची ए मान को आउ तो महत्वपूर्ण लैंग्वेज टी होची हमर इंग्लिश टा, जोटा कि मु आउटे इंपोर्टेंस दिए. ओके, तो ए परि हिसाब रे तमे लास्ट बट नॉट लीस्ट यूज करि पारिबो. नॉट ओनली यू कैन यूज दिस लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट आल्सो these all 12 type of ready-made sentences you can use in your English and strengthen your English and speak elegantly, confidently, clearly and blah blah blah, guys. So well, तो ए वीडियो रे मु एतकी ही कहिबार थिला, जणैबार थिला आ सिखैबार थिला. होप मु ठीक रे सिखै पारि छी. और प्रॉब्लम होई कोइ काइना ओडिया रे एमती सेंस गुडी को आसे गाइस, तमे जोडा कि जानि नथिबो, काइना हमर साहित्य भाषा रे तमे माने साहित्य बही रे देखिथिबो एमती से पोएम गुडा रे ना वर्ड्स गुडा थाय, हम ओडिया भी हमें जानि नथाउ. सेही केस रे हिंदी रे बुझिला आउ टिके इजी लागे, सेहि पय मु एटे इंग्लिश रो मीनिंग पुनी हिंदी पुनी ओडिया आनि छी. तो ए हिसाब रे मु भाबु छी बेटर बुझि पारिथिबो. आ जदी वीडियो टी इनफॉर्मेटिव अच्छे वीडियो रे शिखिछ गाइस, ताहले वीडियो टी गोटे लाइक करिवो, गोटे दुईटा भी लाइक करि पारो. ओके, जदी पॉसिबल थिबो, राइट, दुईटा लाइक केमती करि पारिबो, गोटे लाइक करो, तापर आ गोटे लाइक होचे कमेंट करो. ओके, कमेंट होचे तमरा डबल लाइक हे जिवो, काहे तम कमेंट मते मोटिवेट करिया आ वीडियो आनिया पई. आ तुमको को टाइप रे वीडियो दरकार सेही टाइप तुम मते कमेंट करि पारो. ओके, अकॉर्डिंगली आई विल डेफिनेटली ब्रिंग वीडियोस. आउ लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, चैनल लागू सब्सक्राइब करिवो, काहे तुम चैनल सब्सक्राइब न करिवो ताहले चैनल पाई भी न पाराओ. रिसेंटली हमें 10K फैमिली मेंबर्स हेइछे एटी, तो आशा करछे ए प्रति सपोर्ट थेबो आकू 50K 1 लाख हे जिवो, किंतु डिपेंड करे मो ऊपर भी मो को टाइप रो एटी वीडियो आनुछि, काहे तुम खालीटार तो सब्सक्राइब करिवोनी. जदि वीडियो टी जेन्युइन थेबो कि इन्फॉर्मेटिव थेबो ताहले ही करिवो. तो ऑफकोर्स गाइज, सो स्टार्टिंग रे केबे सब्सक्राइब करिवो, लास्ट पर्यंत देखिवो, तापर जदि वैल्यूएबल लागिला ताले सब्सक्राइब करिवो आ तुम मते कमेंट बॉक्स रे जणैबो. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड गाइज. सो लेट्स मीट वेरी सून इन एन interesting and new video. So thank you again.